Hello, hi. Welcome in, Kevin, Kritika, Anu. Okay. Happy key feelings, no contact. Okay, Anu. Let's start with Anu. Because I'm shuffling. There's no voice because I'm shuffling. So, you know. अनु, ये इंसान की लाइफ में आपको लेकर बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं. ठीक है कि ये इंसान 1 सेकंड. ये इंसान फ़िलहाल लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. ठीक है, आपको लेकर भी और जनरल में भी. ठीक है, ही इज़ लाइक, आप अगर एक कैसे एक्सप्लेन करूँ. आप सोच रहे हो कि ये किंग की एनर्जी में है, बल्कि ये एक सैनिक की एनर्जी में है. मुझे कोई और कंपैरिजन फ़िलहाल सूझ नहीं रहा है. ठीक है. कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं. आपको लगता है कि ये इंसान एक राजा जैसा है. ठीक है, लेकिन वो उसकी हरकतें हैं एक सैनिक जैसी. आई एम नॉट डिमीनिंग सैनिक लोग. ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन मैं सिर्फ कंपैरिजन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ. ठीक है, होता है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वैसा टाइप का है ये. ठीक है, लेकिन आप ऑन द अदर हैंड कैसे हो, इज़ यू आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, ये पहाड़ भी हमने कैसा पहाड़ खोदा है, जो छोटे छोटे हिल होते हैं ना, वैसे खोदा. ठीक है, छोटे हिल खोदा, उसमें भी चूहा निकला. लेकिन आप एक माउंटेन रेंज हो. ठीक है, आपका लेवल ही डिफरेंट है, तो इसलिए आप दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत है. या तो ये लेवल अप करे या आप डाउनग्रेड करो, है ना. लेकिन रियलिटी में मैंने खुद देखा है ये कि आप कभी भी एक आदमी को आपकी लेवल में नहीं ला सकते. वो आदमी आपको उसकी लेवल में ला देगा. ठीक है, तो या तो आप इसके लिए सेटल हो सकते हो, है ना, अपना स्टैंडर्ड ख़राब करके,
या आप थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करो, आपके स्टैंडर्ड के लायक इंसान आपके लिए आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, एंड ऑफ द डे इट्स योर, यू नो, योर कॉल, आपको जो करना है, मैं बोलने वाली कोई नहीं होती, है ना। लेकिन आपको बताना मेरा काम है, तो बता रही हूँ कि आप तो या तो ये इंसान के पीछे वेट करके अपना, यू नो, सोचो आपको हीरा मिलने वाला था और आप कोयला मिलते ही सेटल हो गए कि हाँ ठीक है, कोयला तो मिला ना, है ना। आप वो हीरे को मिस आउट कर रहे हो। तो चॉइस एंड ऑफ द डे आपका है कि आपको हीरा चाहिए या कोयला चाहिए। मैंने, मुझे ना ये कुछ ऐसे सुनाई दे रहा है, यानी लाइक वो एक होता है ना कोड जैसा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ सुनी थी, लेकिन अभी याद आ रहा है कि ना, रिश्ते चेन की तरह होते हैं, ठीक है। कुछ चेन, जैसे कि आप किससे रिश्ता रखते हो वो आपका लाइफ, वो आपकी लाइफ को जज करता है, ठीक है। जैसे कुछ रिश्ते अगर आप ख़राब इंसान के साथ रखोगे, है ना, तो आपका लाइफ भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोहे का चेन होता है, उससे लोगों को बांधते हैं, कैद करते हैं, है ना। फिर होता है कि अ, चांदी के चेन, है ना, उसको पायल बना के पहनते हैं। फिर होता है सोने के चेन, उनको गले में लगा के घूमते हैं, है ना। तो लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं, हर कनेक्शन ऐसे ही होता है। आप किससे कैसा संबंध बना रहे हो, वो संबंध आपका लाइफ में वैसी चीज़ें लाएगा, ठीक है। आपको अब आपका डिसीजन है कि आप बनना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, आपका लाइफ कैसा चाहिए, ठीक है। ये इंसान आपको अभी इम्पोर्टेंस नहीं देता तो आगे जाके क्या इम्पोर्टेंस देगा। हेलो मीना, आई एम गुड, हाउ आर यू? कृतिका, I am happiest to be back as well. Kritika, Tanuj, thoughts for you. 1 second.
क्या पता। एनीवेज, कृतिका, तनुज, थॉट्स फॉर यू। हम्म। ओके, तो वो गाना है ना, मेरे ब्रदर की दुल्हन, वो वाइब्स आ रही है मुझे कि लाइक दिल से हो दिल्ली हो, धड़कन से हो लंदन। तो यू नो, यू आर द परफेक्ट बैलेंस ऑफ बोथ, कृतिका। लाइक मॉडर्न भी हो एंड ट्रेडिशनल भी हो। लाइक आपको पता है कि कब मॉडर्न रहना है और आपको पता है कब ट्रेडिशनल रहना है। ठीक है। अ, वो गाना है ना ब्रदर की दुल्हन का, उसमें एक लाइन आता है, ठीक है, दिल से हो दिल्ली वो, धड़कन से हो लंदन,
है ना। तो वो आ रहा था मुझे कि ना उसको वैसे ही लगता है कि लाइक यू हैव बोथ एस्पेक्ट्स, ठीक है, थोड़े मॉडर्न भी हो, थोड़े ट्रेडिशनल भी हो, है ना, परफेक्टली बैलेंस्ड, ठीक है, वेरी वाइफी मटेरियल, ठीक है। अब इसके साथ उसको थोड़ा वो भी होता है हिचकिचाहट कि इज़ ही वर्थ यू, ठीक है, वो होता है ना इनसिक्योरिटी कि अगर वो आपके लायक है या नहीं है ना। अच्छा। हम्म। इनका इंटर कॉन्टिनेंटल रोमांस चल रहा है। ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। मेरे मम्मा और बड़े पापा दोनों की तबीयत ख़राब चल रही है, तो लाइक बीच बीच में उठ के आ जाते हैं, कुछ चाहिए तो, है ना। तो इफ़ आई लाइक म्यूट इन द मिडल, डोंट थिंक कि आवाज़ कट ऑफ हो गई है, ठीक है। बैक टू यू कृतिका, है ना। I know, Grand Rising, don't worry, I got your message, okay, I got your question, I will do it, ठीक है। Anyways, Kritika, uh, yes, uh,
it's a setting, I suppose, that if you like type the message in all caps, it just automatically thinks you're a spammer and just puts you in a timeout. सो या कृतिका, इसको ये लगता है ना कि आप दोनों हैंडल कर लोगे. इट्स नॉट कि यू विल बी लैकिंग इन एनी वे. ठीक है, इट्स मोर ऑफ कैन ही टेक केयर ऑफ यू. ठीक है, इज ही वर्थ यू. तो इसकी तरफ से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस या ऐसा कुछ लगता है तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी. ठीक है, नथिंग विथ यू. इसकी तरफ से आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हैं एंड पॉजिटिव फीलिंग्स है. ओके केविन, Akshat's feelings and thoughts about you now. You know, not too long ago, like मेरी भी बेस्ट फ्रेंड के क्रश का नाम अक्षत था. एंड आई डोंट नो, दोनों के बीच में कुछ हो गया था. एंड देन उसने मुझे भिजा दिया था उससे बात करने के लिए कि लाइक इसको ऐसा नहीं ऐसे बोल, ऐसा नहीं ऐसे बोल. मुझे मीडिएटर बना दिया था दोनों ने. लाइक वो तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन यही मैं पीछे पड़ गई थी कि उसको ये बोल वो बोल. But years later she's like, "Chi, why did I like that guy?" उसको सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट होता है. Anyways, Kevin. Do you not meet each other? Because उसकी तरफ से it feels like you are something from the past. You know, you are a chapter he's closed and moved on. And I think you should close this chapter and move on as well. ठीक है? No wonder मेरे best friend का भी आया था, because she closed that chapter in her life and she moved on as well. So हाँ, ये भी नहीं सोचता you didn't mean a lot to him. I know थोड़ा harsh लग रहा है, but it feels like you need to hear this. But there was not a lot between the both of you. You are a chapter he's closed and has moved on, and it's time that you do the same as well. ठीक है Kevin? Shrima. What does Deepak feel about you? Uh-huh. You're very emotionally mature. ठीक है, आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड हो. ठीक है, आप इमोशनली फुलफिल्ड हो. ठीक है, बहुत फेमिनिन हो. ठीक है, और ये फाइनेंशियल. ठीक है, वो एक होता है ना, बहुत ही बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो hello empath, hello next big thing, hello cosmic dust, hello Samreen, hello to everyone spiritual, everyone who's come in and I didn't greet you. Hello, I'm sorry I missed you. Yeah, Shrima, as I was saying कि
You know, you are very emotionally mature, emotionally abundant, okay? You are embodying the divine feminine, and he's in a more provider energy, you know, financially providing. And he thinks that, you know, he's left this connection and whatever happens of it to God. ठीक है, whatever happens is on God. If he wants, if you know, God wants to take this forward, God will. If God doesn't, God will not. So he sort of left that on God. He has a very neutral perspective of you and is not thinking too much about it. ठीक है, तो but yeah, he thinks you are definitely someone he can think of a long term future with. Okay, the wedding was fun. मैंने खूब डांस किया. मेरी चप्पल मुझे 2-3 बार काट भी ली. और दूल्हे की कोई बहन नहीं है, ठीक है, तो आई वुड बी लाइक द क्लोजेस्ट सिस्टर, है ना, रिलेशंस में. तो लाइक मैं ऐसे खूब सज धज के गई थी, है ना, बारात में डांस कर रही थी, तो वो पूरा ईयरिंग ऐसे इतना खिंच रहा था, ईयरिंग खिंच रहा है, वो जब मांग टीका होता है वो ऐसे ना ऊपर फट फट करके मुझे लग रहा है. तो लाइक पूरा शादी में लाइक बारात के बाद भी डीजे भी था, तब भी डांस किए हम. तो ना हर एक लाइक हर एक आधे घंटे में ना मेरे ऊपर का एक एक ज्वेलरी कम होते गया पूरी शादी में. स्टार्टिंग में कितना सज धज के थी, उसका एकदम ऑपोजिट थी एंड तक. एंड लाइक मेरी बड़ी बहन की छोटी बेबी भी थी, तो फिर बाकी का शादी में उसके पीछे 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 घूमी. और लाइक ठंडी के मौसम में तो हीटर्स भी थे ना, तो वो बार बार ना हीटर के पास जाके हाथ घुसाने जा रही थी उसमें, तो उसको देखना पड़ रहा था खूब. तो मेरा शादी उसमें ही गया, और जब तक एक्चुअल शादी का टर्न आया मैं सो गई. तो लाइक ऑल दिस फॉर नथिंग. क्योंकि शादी एकदम यू नो एक मैं 2 बजे तक जागी, ठीक है. 2:30 बोले थे शादी, नहीं 1:30 बोले थे शादी स्टार्ट होगी. आई वेटेड टिल 2. दूल्हा दुल्हन रेडी ही नहीं हो रहा. बोला कैसे पूरा ना आउटफिट चेंज इतना कर रहे हैं जैसे कि भगवान जाने क्या है. बट लाइक अगेन यू नो उनकी शादी है, तो उनका वेट करते करते मैं ही थक गई, मैं ही सो गई. ओके लीना, वेलकम इन. Yeah, back to the readings. Farheen, हाँ लाइक 4 बजे 5 बजे तक आराम से चलती है शादियाँ. तो लाइक मैं उठ के भी आ गई और इन लोगों की विदाई ही नहीं हुई थी. Makaya, I've got your question. Don't worry about it. I'll call out your name when it's your turn. You don't have to, like, you don't have to post it over and over again. पॉसिबिलिटी है श्रीमा, बट दिस इज़ यू नो कुछ कनेक्शंस आपको टाइम के साथ ही देखने पड़ते हैं, है ना. ये कनेक्शन भी वैसे ही है कि लाइक थोड़ा अनक्लियर है. आपको वो होता है ना, हर चीज़ नहीं पता कर सकते, टाइम के बाद ही पता होना है. ओके फरीन जी, ये क्या बोलते हैं, ये इंसान, आई डू डोंट वरी, आई विल गो इन एन ऑर्डर. सेम गोज़ फॉर यू लीना. फरीन जी, ये फ़िलहाल बहुत ड्रेन्ड हैं, ठीक है. ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया है ना उनके सर पे,
तो उनको बहुत मुश्किल हो रहा है और वो आपके साथ कुछ भी हाफ़ हार्टेडली नहीं करना चाहते, ठीक है? वो आपके साथ कुछ भी करें, उनको कंप्लीटली करना है ना? ऐसा नहीं कि लाइक वो होता है ना कि किसी को घर पे बुलाया है तो उसको पूरा खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि जस्ट स्नैक्स देकर भिजा दिए, बाय बाय टाटा सी यू कर दिया, है ना? एटलीस्ट जो क्लोज़ होता है अपने, है ना, कि कोई पास का करीबी प्यार का घर आता है तो उसको ऐसे, वो भले ही खाकर भी आए लेकिन उसको ठूस के भिजाना है। आपके साथ भी ऐसी है, ठीक है? आप आओ तो वो खुद को पूरा आपको देना चाहते हैं, ठीक है? कंप्लीटली आपके साथ अन अनडिवाइडेड अटेंशन आपको देना चाहते हैं, है ना? लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो वो दूर रहते हैं, ठीक है? उनका ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी हाफ हार्टेड करें। अगर उनके पास एनर्जी नहीं है तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी करेंगे पूरे दिल से करेंगे, ठीक है? वो एक गाना आ रहा है, न्यू एक गाना आया था, आई थिंक, माहिया माहिया तेरी मेरी एक जिंद जान है। आपके लिए चैनल हुआ है, आप जाके सुन लेना। दो पति पत्नी ऐसी कुछ मूवी का नाम है। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे ना सेटल हो जाएगा, तो इनका जो भी स्ट्रेस है एक फिर से ना एक आप दोनों के कनेक्शन का एक साइकिल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? आई वुड से न्यू ईयर के आसपास ही। तो लाइक वो ये बैलेंस करना भी सीख लेंगे और ये कनेक्शन को ना एकदम न्यू एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है? तो लाइक ये जो भी एनर्जी में है अभी कनेक्शन, बहुत ऐसे बासा फील हो रहा है, ठीक है? बहुत ओल्ड, है ना? तो वो जब भी आएंगे एक न्यू एनर्जी के साथ आएंगे, या ना एक न्यू साइकिल के साथ आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं कि अभी गायब हो जा रहे हैं ठीक है? लेकिन हाँ, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी हो रहा है ना कि टाइम नहीं है तो आपसे दूर रहेंगे, है ना? वो बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है? तो दैट इज़ द न्यू एनर्जी, नॉट कि कुछ और हो रहा है। ठीक है, मीना, आपका टर्न आ गया। लेकिन हाँ, फजीन जी, आप जाके वो गाना सुन लेना, माहिया। माहिया तेरी कंचन बरसात है। माहिया। हम्म। आई डोंट नो ये किसके तरफ से आया है, बिकॉज आई डोंट थिंक ये, मैं आपको गाना भेज देती हूँ फरीन जी, आप जाके ये सुन लो। आपको जिससे भी कनेक्ट होता है कि किसी के भी तरफ से आ रहा है आपको लिरिक्स सुन के, आप वो देख लेना, ठीक है? यस केटी, आई एम बैक। No, Lena, I'll call out your name when it's your turn. You just asked a yes or a no question, right? I'll do that quickly. Will Victory divorce his wife? Okay. Uh, hmm. Got it. Anu, just wait थोड़ा सा ना, I'll get back to you. एक सेकेंड, हाँ? Will Victor leave his wife? Will Victor divorce his wife? Mm. हाँ, yes, he will. Um, Lena, he will, but if you are also interested in this man,
Um, sure, Katie. If you're also interested in this man romantically, I just want you to keep this in mind that if this man already married had the audacity to look at other people while he was married instead of, leaving his wife, he can do the same to you. I'm not claiming to know a lot about this relationship, but just a little disclaimer out there, okay? Um, Anu, what was your question? Do you have a question? तब तक will do Meena. Uh, channel message song. Cannot hear me. Am I audible? Lena, maybe, rewind the stream again so that you can listen to it. Okay. You're, Meena, you are very, आप बहुत ना इमोशनली कंप्लीट हो, फुलफिल्ड हो, ठीक है? आप में कोई कमी नहीं है। जैसे पहले आप इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए खिंचे चले जाते थे, इवन इफ इट मे हैव बिन रॉन्ग, ठीक है? आप इमोशनली अब बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो ये इंसान को, ठीक है? ये इंसान समझता है कि अगर ये आपके लायक नहीं बनता तो आपको उसको छोड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उसको छोड़कर जाने में या उसको रिजेक्ट करने में आप 2 बार भी नहीं सोचोगे, ठीक है? No, Lena, I did not see it in the cards, but I mean, I sort of did. You can say I did. ठीक है? बट हाँ, उसको ना, मीना जी, वो एक चीज़ है ना कि आप अपने हॉबीज़ में फोकस कर रहे हो, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं वो उसमें देख रहे हो आप, वो चीज़ बहुत एडमायर करता है ये इंसान, ठीक है? आप अगर सोचो कुछ कर रहे हो तो आपका हर छोटी चीज़ इसको बहुत प्यारी लगती है। ही इज टॉकिंग, क्योंकि जब मैं आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ चैनल सॉन्ग ना, तो मुझे वो पार्ट आ रहा था। कौन सा गाना है ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, तेनू छड़ के किथे जावा, तू मेरा परछावा, मखने विच ही नता, रब नू अपने पावा, जीना मेरा हाय गन है तेरा, की मैं करा तू एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, मैं तो यूं जान मेरी जान मेरी। मैं पूरा गाना गा लिया लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। समझावा, हमटी शर्मा की दुल्हनिया। थैंक यू अनु, थैंक यू। मीना, इट्स नॉट दैट कि लाइक ब्लॉक भी हो तो, ठीक है? इट कुड भी कि पहले देखा हो, उसको ही बार बार सोच कर लाइक खुश होता हो दिल में कि लाइक हाँ, यू नो। हाँ बुशरा, आपका हो गया, डोंट वरी, ठीक है? कि लाइक उसको ही रिवाइंड करके अपनी मेमोरी में सोच रहा हो कि हाय ये कितनी प्यारी लगती है ये करते हुए,
लाइक आपका गुस्सा भी इसको प्यारा लगता है। ठीक है, समझावा जाके सुन लेना। ओके अनु, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड से कब मिलूँगी, जिसको मेरा वर्थ पता हो, उसका वैल्यू हो, और मैं भी खुश रहूं और सेटिस्फाइड रहूं। लेट्स सी अनु। अनु, लाइक एज सून एज आई एम इन योर एनर्जी, मुझे लाइक वो गाना आ रहा है, वरुण धवन का एक वो था ना, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। नहीं कृति जी, आपका अभी मीना का किया है, अनु का कर रही हूँ, उसके बाद योगिनी का है, देन योर्स। हाँ, लाइक आई थिंक दिस इज अ सीक्रेट एडमायरर, ठीक है, क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा था कि तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। ठीक है, तो लाइक आपको नहीं पता है कि वो उधर है, बट उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको लाइक ऑलरेडी हो ना, ऐसा लगता है कि मैं हूँ इधर, मैं हूँ इधर। वेरी क्यूट एनर्जी, ठीक है। आप वो गाना जाके सुन लेना, ठीक है। वो एक पार्ट होता है ना, अम, ये तो ओपनली डिक्लेयर, ये गाना का अगर म्यूज़िक वीडियो देखा होगा तो पूरा गाना में पूरे कैंपस के सामने ये डांस कर रहा है ना, कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। लेकिन एक पार्ट आता है जहाँ दोनों अकेले डांस कर रहे हैं, है ना। आ तेरे नखरे उठाऊं सनम, ओ मेरी जान जा, ताकत जान को तेरी यकीन। मैं तेरा मेरा गा रही हूँ, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं लाइक क्या बोल रही हूँ, है ना। तो लाइक ये ओपनली भी अपना प्यार डिक्लेयर करता है और प्राइवेट में भी, ठीक है। कुछ होता है ना आदमी लोग जो अपने फ्रेंड्स के सामने अपने पार्टनर्स का लाइक मजाक उड़ाएंगे कि लाइक पब्लिक में अपने पार्टनर्स का ऐसे मजाक उड़ा लेते हैं कि लाइक यू नो मैरिड जोक्स मारते हैं कि लाइक एक रिलेशन में दो लोग होते हैं, एक इंसान हमेशा सही होता है, दूसरा इंसान पति होता है ना, ऐसे लाइक वेरी लेम जोक्स जो क्रैक करते हैं, है ना। ये इंसान वैसा नहीं है, ठीक है। इसके मन में आपके लिए जितना डिवोशन अंदर है, लाइक प्राइवेट में है, उतना ही पब्लिक में है, ठीक है। इसको जोरों का गुलाम बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको ये बात से प्रॉब्लम है कि उसको जोरू का गुलाम बुला रहे हैं, ठीक है। गुलाम मीन्स स्लेव, है ना, कि आपने उसको बांध कर रखा है, खरीदा है उसको। बट ही इज़ लाइक मैं गुलाम नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्लेव, आई एम अ डिवोटी, ठीक है। मैं अपनी इच्छा से आपको वर्शिप कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज यू बॉट मी, ठीक है, बट बिकॉज आई फील दैट इमोशन टूवर्ड्स यू। हाय, सो मेच्योर। Ah, so mature. I love that. Um, इसके ना हल्के से बाल कर्ली हैं, ठीक है, वेरी कर्ली हेयर, ब्राउन आइज़ हैं। आई थिंक ब्राउन आइज़ आर वेरी कॉमन ना। थोड़ा उसका कलर वीटिश है, ठीक है। हाय मनोकामना, वीटिश कलर है एकदम, बहुत यू नो बहुत वाइट नहीं है, वीट जो थोड़ा सांवला कलर होता है ना, आई वुडंट से एकदम डार्क शेड में आ रहा है। बहुत इंडियन स्किन टोन जो होता है, देखो एकदम लाइक लाइट स्किन टोन्स में नहीं आ रहा है, डार्क में भी नहीं आ रहा है, जो बीच में रहते हैं ना। अच्छा, नेम मीत है। अच्छा,
मुझे लगा मीट मीट मीट, किससे मीट करना है? ये डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है क्या? अ, अ, ना, नहीं नहीं, नॉट मीट। आई डोंट थिंक ओपनली कॉन्वर्जेशन हुआ है आप दोनों का, ठीक है? इसने दूर से देखा आपको, दूर से पसंद किया है, अभी कॉन्वर्जेशन होना बाकी है, ठीक है? और आपको इसके बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं पता क्योंकि इवन ही इज जस्ट सीन यू ऊपर ऊपर से ना, वो आपको अंदर से जानता नहीं है। बिकॉज ही सच अ मेच्योर पर्सन, वो वो आपको पहले जानेगा, परखेगा, समझेगा एंड देन हिल एक्ट ऑन इट कि लाइक अच्छा हाँ ये ऐसी है, अच्छा ठीक है, फिर इसके पास जाऊंगा मैं, ठीक है? बिकॉज सी दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है? ये मेच्योरिटी जो होती है, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये दूसरों के साथ वैसे रहे तो पहले आपके साथ भी वैसे ही रहेगा ना, कि लाइक इसको जज करना है, परखना है कि ये हाँ सही इंसान है क्या, फिर आगे आएगा, है ना? तो हाँ, ओके। आई वुड से आप लोगों के बात आगे जनवरी के आसपास पड़ेगी, लाइक दिसंबर एंडिंग जनवरी में आपको थोड़ा थोड़ा ना ये दिखने लगेगा इंसान कि लाइक अच्छा हाँ शायद ये है, ठीक है? फिर सोचो अप्रैल तक आप लोगों की बात स्टार्ट होती है, अप्रैल मई जून तक, है ना? तो धीरे धीरे करके सॉलिड होगा आप लोगों का कनेक्शन, ओके? योगिनी, तब तक अनु आप भी ना बहुत केयरफुल रहना हु कि आप किससे क्या बात करते हो, ठीक है? क्योंकि जैसे ये भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ेगा ना, वैसे ही आप भी समझना, ठीक है? अगर एकदम से कोई आप पे चढ़ रहा है तो आप समझ जाना कि दिस पर्सन इज़ नॉट दैट पर्सन, और ये बहुत ही या तो गलत रीज़न से आपके पास आ रहा है या ऐसा कुछ, ठीक है? कीप दैट इन माइंड। ओके। Intentions and feelings. Hmm. फिलहाल ऐसा कुछ क्लियर नहीं लग रहा है योगिनी जी कि लाइक दिस पर्सन इज क्लियरली फीलिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है? बिकॉज राइट नाउ इवन ही इज कंफ्यूज्ड, लाइक ही नोज कि आप थोड़े इमोशनल रहोगे, ही नोज कि ना आपको इमोशनली बहुत संभालना पड़ेगा, लाइक मैच्योरली संभालना पड़ेगा, ऐसे निब्बा निब्बी वाला एटीट्यूड बिहेवियर आपके साथ नहीं चल सकता, ठीक है? और कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ भी आता है और आपसे दूर भी जाता है, ठीक है? लाइक इसको आपके पास भी आना है लेकिन आपके पास आने से इसको डर भी लगता है। Sure, Katie, just in the middle of a reading. I'll get to you when I'm done. है ना? Uh, I'm happy to be back.
ठीक है, तो लाइक आपके गाइड्स की तरफ से एक एडवाइस है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, आप अपने खुद पर फोकस करो, अपने हॉबीज़ पे फोकस करो, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे छोड़ दो, ठीक है। खुद से समझे ये, है ना। डोंट गिव हिम द सेटिस्फैक्शन कि हाँ जब तक ये डिसाइड कर रहा है आप यहीं वेट कर रहे हो, ठीक है। आप कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं हो, कोई गवर्नमेंट काम नहीं करवा रहे हो, ठीक है। यू आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड एज ही इज़, ठीक है। तो आपका टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आपकी एनर्जी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को यही इंसान पे वेस्ट करते रहो दिन भर, ठीक है। तो लाइक बिल्ड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर करियर, है ना। इसका जब अकल ठिकाने आएगा तब आ जाएगा। इसको थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना है और इमोशनली भी बेटर होना है। इज इट बफरिंग? एनीवेज, हाँ। तो लाइक तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ठीक है। डोंट गिव हिम लाइक द कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस कि आप हो इसकी लाइफ में, ठीक है। आपका आपके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आपको खुद का लाइफ बनाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ये फालतू इंसान को अपना अटेंशन देना। सॉरी फॉर द लैंग्वेज यूज्ड, बट इतना कंफ्यूजन में आपको रखने वाला ये कोई नहीं होता, ठीक है। आप अपना खुद पे फोकस करो, ये जब सुधर के आएगा तब इसको वेलकम करना, ठीक है। ओके केविन, वी हैव अनदर केविन। कृति, लाइक अच्छी जॉब आपको 4 महीने वेट करना पड़ेगा, ओके। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ गुड जॉब you need 4 months, but that is because इस बीच में, इस दौरान में you'll be upskilling, okay. It's I see you doing a course in these 4 months, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आप घर पे अकेले बैठ के सिर्फ जॉब सर्च ही कर रहे हो। I see you gaining something important knowledge, especially psychology से related, ठीक है। तो लाइक आपका जो भी फील्ड है आप कुछ साइकोलॉजी के बारे में सीख रहे हो, ठीक है। आप फिर वो थोड़ा समझ रहे हो एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर अदर पीपल हु आर अप्लाइंग एज वेल, ठीक है। आई डोंट नो आप कौन सी फील्ड में हो, वट एवर योर फील्ड इज़, यू हैव, आई एम श्योर जो भी फील्ड में हो यू हैव टू डील विथ ह्यूमंस। अच्छा, that's what I was wondering कि like even my brother, he's from yes, kind heart, you are next. He took computer science as well. He did engineering and he worked in Amazon. He changed his like post 5 times and he went into HR. इवन लाइक मेरे मामा मामी जो हैं वो भी मास्टर्स की इंजीनियरिंग में एंड देन दे आर लाइक मैनेजर्स एज वेल, है ना। नो डोंट वरी काइंड हार्ट, डोंट वरी। नो, आई डिड नॉट,
Makaya, I did not forget anyone, don't worry. I'm going in an order. ठीक है. तो like Kriti, you know, corporate world में you don't get the job you apply for, mostly, most of the time. Katie, I was waiting for your question. So like Kriti, you know, any skill you put in will be helpful. ठीक है. तो like I do see you upskilling. ठीक है. आप upskill कर रहे हो कुछ, you know, एक, like you said you're doing computer science. Let's assume you do take up psychology. ठीक है. With that you may get into like maybe, who knows. uh, my voice is a little weird these past few months, but thank you. uh, like I can feel the strain in my throat. You may know me, who knows. uh, but yeah, Kriti, as I was saying, you know, upskill, है ना? Maybe, you know, you get into psychology and you somehow, you know, use like dark psychology tricks on your interviewer or something, but huh, like you're developing your skill set in the meantime. ठीक है. All the best. You know, I hope आपको ये job बहुत जल्दी लगे, है ना? जल्दी से ज़्यादा I hope you get a like a good job. ठीक है. Because again, because you know, प्यास लगी तो कोई भी गटर का पानी नहीं पिएगा, है ना? है ना? तो like always go for something, you know, good rather than convenient. ठीक है? uh, no, you are, all of you are so sweet. Maybe Makaya, who knows. Katie, kind heart, just give me a minute, okay? Katie's just purchased a reading, so she'll have to be prioritized. Both of you, in a manner of speaking, Katie, love each other like equally, okay? Both of you have different expectations with this love, which causes this sort of disturbance, you know, imbalance between the two of you. Like, you know, for you, he is an addition to the family, you know. Whatever you've built so far, he is adding to it, okay? But for him, he wants you to, you know, sort of keep a distance with whatever you've built, and, you know, both of you build separately, you know. He's more on the immature side, you know, a very unrealistic expectation with this love. That is something, you know, he'll have to learn on his own rather than, you know, you sort of pushing. Yes, you know, you want to build up with whatever you already have,
but he wants to build something new. Uh, you know how when you're playing with building blocks, you sort of have like a common mat, and then you're building the house and everything, and then he's like, why are you building everything together? Build it separately, build that separately. It's sort of he's expecting you to live like a double life. Again, very unrealistic. This is not some movie going on. Your kids are just as important. Whatever you've built is just as important. As I've said, this is something he has to build on his own. You will, both of you will come on the same page. You're already where the both of you are supposed to meet, okay? He's just sort of wandering around. He'll have to, leave certain expectations, certain behaviors behind for this to work, okay? You're already doing all that work. You don't have to worry too much. You don't have to think too much about it. And again, this is something he has to figure out on his own. So, uh, there's not anything you can do. I mean, listen, Katie, if you weren't, if the both of you weren't meant for something bigger, do you think both of you would be like so caught up in all of this for so long? Yeah, you get it. Kind heart. Did you walk away from someone recently? No, Katie, thank you so much. You've been on this journey for years with me now. So you've been a part of this channel as much as most of the people. So thank you for everything you did. Kind heart, if you've walked away from someone, this person is sort of intimidated by that, one wrong move and you won't think twice before leaving. and I'll always be that. uh, so while you are the center of his attention, he knows that he needs to get better financially, you know, like stop being the sneaky guy, fix his life, grow towards something more important, not just be some lame guy, but someone who's ambitious and all that. A creator rather than a sufferer, if that makes sense. You know, to him, you are someone he's supposed to work to become better for, you know.
he either becomes better for you or he should go settle for someone less. You know, he knows that he cannot sit with you in the same energy, in the same mindset, you know. Like, he cannot expect you to lower your standards just because he. And your expectations are not unrealistic, okay? It's like, you know, asking for the bare minimum, and then these men think, like, oh my god, you know, she's asked me for something very unrealistic and all that, right? And so, yeah, doing the bare minimum, asking for the bare minimum is not something unrealistic. So, like, he either, you know, gets to that level or he can, you know, be out. Ah, I see. Ah, I hate this, you know. Um, I'm not a fan of cheaters. I don't think anyone is, but. Mhm. Good, because you know you're not just some side piece. You don't deserve that. Soulful. After soulful, we have grand rising, then felicity, then higher consciousness. I didn't even see you coming in there. Uh, thank you as well. Soulful channel message for soulful. Okay. I don't know why something here feels like, you know, I'll do this the day pigs fly. Mm. We're doing soulful right now, then grand rising, you are next. Okay. Uh, Soulful, this person is very, you know, very rigid about something. Like, I'll do this the day pigs fly type of a person, you know. So if he's not, yes, soulful, I'm doing your reading. नहीं बुशरा right now soulful का कर रहे हैं, then grand rising, then felicity, higher consciousness, फिर आपका. तो लाइक एक दो तीन तीन लोग हैं आपके पहले. Soulful, as I was saying. This person's very rigid when it comes to certain things, okay? So, like, he's like, I'll do this when the day pigs fly. He's very childish with certain things as well. So, you know, if he's rigid about everything, okay, if he wanted to do something, he would have already done it. Okay, so if you're waiting for something from this person, there's and you're waiting for a long time, there's a possibility that, you know, it's already out of his mind, and there's a possibility that he won't, you know, actually do it, right?
I don't know why I feel like saying that, but I do. You know, it's coming up, so I'm saying it. And this is a very cryptic message, even for me. I don't understand this. I'm just saying what I'm seeing and hearing. So, like, whatever you understand from it is yours. Okay, because there's not a lot. I don't understand it, so I cannot elaborate more. Okay. So, like, I'm sorry if this feels very cryptic or, very short or very, broken or something. But, like, I don't understand it myself. Oh, that's good. That's good. That's good. Always let go of people that don't serve you. But, like, as long as the message, makes sense to you. Like, the pigs fly thing, him being very rigid with certain things. It could be maybe he's thinking that maybe he'll come convince you to stay, or he'll come to convince you the day pigs fly, something like that, if that makes sense. Grand rising. Okay. If have you like uh, a recent action of yours towards this person has sort of left him feeling insecure. Okay, so like if you've said something to him, or like if you've done something towards him, it's left him insecure, and he's like, you know what, the day I have money you're going to regret doing this to me. It's very I don't know why this is giving Andrew Tate, like like listening to male podcasts, like females. Na Manokamna Bushra came like long ago. Yeah, toxic masculinity. So, like, females be acting like they don't need anything, but the day you're nothing, they leave you. But then the day you gain something, they're back again. And then, he's listening to all these alpha male podcasts and all that, and acting like, oh my god, I'm going to have like the biggest glow up of the century. He'll put everything to shame, and yeah, he just, well, if you act like a clown, you're going to be put in a circus, okay? I think there's time, Manokamna. But if you have to go sleep, it's okay, you can go sleep. That's good, because these podcast alpha males are something we should all, stay away from. That's one infected breed. uh, but yeah. Eh, like, men. No shade on all the amazing men here, okay? I have brothers, I have father, I have an uncle, amazing people. Just these
Men with fragile masculinity. Felicity. How does Charles view you? You're very sneaky. You know, you get what you want when you want it, and you know when to strike. So you're like, if they're playing chess, you're like the queen there. You know, you have the most moves in like all the pieces. And like being with you only comes after a lot of hard work. So like you're a result of a lot of hard work. Or I will, you know, um, I'll remember like approximate time when I did your reading. ठीक है? Once I'm done, like once I'm done or something, I'll find your, maybe old messages or comment on my channel. Yeah, कल morning पे you leave a message on or a comment on this stream and I'll give you the timestamp. But I think I have your Instagram, no? If I do, I'll send you like the timestamp there. Don't worry. But like, I don't want you to, ruin your sleep for this. ठीक है? We can figure something out. ठीक है? Don't worry. Okay, higher consciousness. This military guy, Jay. No worries, Manokamna. Morning tak dekho when you wake up, if I don't leave like a reply to your comment or anything, leave a comment. वरना यू नो व्हाट, मेरे लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पे जाके सिर्फ एक हाय डाल दो, ठीक है अभी. And once I'm done with the stream or whenever I do your reading, I'll leave your timestamp under that comment. ठीक है? ये लाइव में क्यों करना? लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पे कर दो. अच्छा ठीक है. हाँ, if you click on it you'll directly go to it ना. हाँ, good idea. God. Higher consciousness. Messages and songs from this military guy. Sure, Manokamna. Uh, you know what? Higher consciousness. For your channel song, I wasn't really getting a song, it was more like an ad. I was hearing the song used in like a life insurance ad. So, like, you're someone he'd put down as a nominee for his life insurance. You know, if you were. You make him want to celebrate things, you know.
you make him want to celebrate. Yeah, life insurance. Like, I think it would resonate as in, thank you so much, Manokamna. I'll keep that in mind. I was just thinking my throat was fine before the stream. Like, इतने दिनों से इतना बात नहीं किया ना, एकदम से कर रही हूँ तो I think क्या side effect. You know, it's like for him, he's not all about the grand gestures, you know, nothing too fancy. When it comes down to it, he's more of a practical lover, you know. He'd rather you have a secure life in case something happens to him than, you know, making you feel all loved up right now. Does that make sense to you? Because, like, as long as he lives, he knows he'll take care of you, but he wants to take care of you after he's gone as well, you know. He wants you to enjoy the fruits of his labor. uh, you've asked for channel you've asked for messages and songs, have you not? I mean, even if he is, I don't know why he feels this way then, but he does. That's why he's not romantic. He's more practical with you. That's why his reading was about him being away from you. I don't know, higher consciousness. I don't think I should think too much into this. I'll just give you what I'm seeing, hearing, you know. If he has love for you, do these messages not make sense to you then? They should, right? Because somehow the seed's already been planted, you know. You cannot stop the seed from growing once you've planted it. Should have thought about it before you planted the seed. Bushra, then we have Forever Blissful, then we have Phoenix Rising. Okay. Bushra. ऑन एंड ऑफ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान को दूसरी चॉइसेस भी मिल रही हैं बहुत सारी, ठीक है। उनके आसपास आई थिंक कोई और भी लोग हैं जो इनमें इंटरेस्ट रखते हैं और ये भी इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो लाइक
ये आपको अपनी फर्स्ट चॉइस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कमिटमेंट के चांसेस है, ठीक है। ये नहीं बोल रही कि कमिट नहीं करेगा, लेकिन ये भी बोल रही हूँ कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, ठीक है। लाइक देखो, अगर इसको आप सच्ची में उतने ही पसंद थे, उतना ही ये श्योर था आपके बारे में, तो ये दूसरे लोगों को एंटरटेन नहीं करता ना, है ना। आप क्या दूसरों को एंटरटेन करते हो? जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव। नहीं करेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। इट्स जस्ट आप, मुझे इसका चिंता नहीं है, ये आपको मना लेगा, पटा लेगा। आप नहीं पटे तो किसी और को पटा लेगा। मुझे आपका चिंता है कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाओगे। आगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ना कमिटमेंट, लॉयल्टी डिज़र्व करते हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन में। और ये फ़िलहाल ये इंसान के आसार तो नहीं दिख रहे। ठीक है फिर तो, लाइक हाँ, डेफिनेटली कमिट करेगा ये। लाइक मैं बोला ना, ये आपको मनाएगा, आप नहीं माने तो आगे जाएगा, किसी और को ढूंढेगा। तो forever blissful, feelings and intentions of FM towards you. Hmm. You know, you make this person very self-conscious. How do I explain this? You know how when you walk into like a store in very casual outfits and everyone's well dressed, you sort of feel self conscious of what you look like, you know. That day, even if you know one hair is out of place, you're like, oh my god, I hate my hair and all that, you know. But sometimes this person feels like you're very indecisive, you know. You can be spontaneous, you know, but often, like, you either, whatever you do, you know, you get full energetic about it, you know, you, 1 second you're bouncing off the walls, the next second you're like burnt out and like, you know, just sitting there in the corner. The very, for them, you
you lack direction in life, you're constantly running around, maybe aimlessly. You also get bored very easily, you lack the right motivation. Sometimes you feel uninspired. You do have a fiery personality, but you don't channel it well. Maybe, yeah, he sees himself in you. Like, how people project, if there's something I feel, I'm going to say, like, oh, you are like that. So, yeah, that could be a possibility. Maybe he's projecting onto you. Like, everything he is, he's projecting on you. Hmm. That could be it then. I think you've asked for his feelings, right? Hmm. Yeah. Towards you, right? Hmm. I would say that's also his intentions. He's just sort of running around. He's not too sure just yet. Very indecisive with this, very confused. I'm sorry if uh, these next readings come as rushed. um, I think my throat's sort of starting to give out, so I want to finish your readings before I my throat shuts down completely. So, like, bear with me. I'm so sorry for all these rush readings coming up for all you beautiful people. Not that initial people mattered more or you didn't matter anymore. Okay. Uh, just the situation. Alright? Phoenix Rising. Uh, hmm. Sure. By the time you post your question, we'll do spiritual. Okay. Spiritual, this person feels like they've betrayed you in the past, but they're trying to fix their mistakes, but somehow you are, prepared to move on. You sort of want new things in life. Maybe you are, this is what they think, okay, towards you. That, they've somehow betrayed you and they have to, fix things, fix their life and, become better. All the while, you are sort of, uh, um, no, he doesn't see like the opportunities he's missing out on. He sort of just knows that he has to do better to,
get this going, you know. uh, sure, Katie, ask away. But Phoenix, I think initially things were getting rocky between these two people. You know, one of them is trying to get this, one of them is trying to fix this connection, but the other one sort of being sneaky, dishonest, disloyal, you know, betraying the partner. So, like, so it's like, you know, in this relationship, like, I think one of them's trying to make this relationship work while the other is, you know, hell bent on ruining things. Does that make sense to you? Phoenix, does that like sort of at least give you a little clarity? No. Like on the outside, it looks like it because, you know, it's like one partner's completely draining, the other one's trying their best, and the other partner's just, you know, not interested. So, like, words are falling into deaf ears, actions into blind eyes, you know, and all that. So, yeah. So, like, on the outside, it may look like things are working out between them, but on the inside, both of them are miserable. Okay, Katie, uh, it's not like it didn't work out, you know, it was years of relationship just doesn't heal overnight, you know. These things take time, and your connection will heal over time as well. It will take time, no doubt. And what happened between you and your mother, this was something she needed to experience, you know, this leaving the country and, you know, coming into a new place, experiencing this sort of, you know, giving her that experience was important. Don't take it on you that you failed somehow. It doesn't work like that, you know. Relationships, regardless of what it's called, it's still difficult, you know. Connections are difficult to heal, to work, and anything. Relationships are hard work, and this one's no different. You know, this will require just as much hard work.
Mm. She'll be okay there. She'll be okay there. Don't worry. Older people have sort of built this ecosystem where, you know, if things don't go their way, they don't like it. And then, no matter how terrible how they like it truly is, they're still going to stick to that, if that makes sense. So, like, whatever she's comfortable with, whatever she's used to, no matter how outdated it may be, she's still going to pick that over whatever you are offering. So, like, to her, it is a very acceptable outcome. She'll be fine. Don't worry. It's like, how do I explain this? She's used to that environment, and it would feel home to her. She seeks home in places rather than people. Katie, she finds home in places rather than people. So, like, if she feels comfortable there, would you rather, she stay in this new country or somewhere she truly feels okay, home? If she feels safe there, comfortable there, it's okay to give her what she wants. She's asked for it. And she was stubborn about it as well. Mm, so don't, you and I both know that, she's asked for this if that's what she wants. There's nothing you can do to change this. This is something she wanted. And if she truly feels home in that place, then it's not really that bad. Uh, Next big thing. MJ thinks that, you take a lot of things for granted. When you're given an opportunity, you don't take it, and then you just, you sort of just sit there
being miserable, and like you don't really, when you're given an opportunity, you don't take it, and then you're sulking about how you don't get opportunities, you know. So like this person's like, oh no, you know what, you can be a little more grateful, a little more open to opportunities and all that. Okay. um I know, Katie, you do. And sometimes for that to happen, you do have to make difficult decisions like the one you're making in these moments, you know. um sure, Katie. Do you mind if I do like very quick readings for a few seconds? Because I'm a little overwhelmed by these questions for a moment. You know, cosmic dust, what blessings can you expect in your life in December? Um, you are your own blessing, okay? You have sort of learned to keep yourself trapped in like a bubble or a shell. You need to get out of it, okay? The more you open yourself up to the world, the more you'll realize is every blessing you were seeking was already there. You just weren't open enough to welcome it. Okay, so every blessing you seek is right around you. This December, you're sort of just acknowledging it, opening up yourself enough to welcome all that. Okay? Um, Samjeen is teaching truly your career. Yes, it is. Shaping young minds is your calling, and it may take time. I would say 2 months. Okay, but I wouldn't say a field where you feel satisfied. You will eventually, but it's like you start somewhere and then, you know, through promotions, changing jobs, and all that, you get into like, you know, a field or a career you like. Okay, so you're not directly going into that field, more like, you know, you have to work towards that field. Okay. um, Empath at soul, how does um, F view you presently? F thinks you are very, you know, hurt, betrayed, you know, that you're just processing a lot of pain in your heart, and this person sort of just left you to it, you know, deal with your pain. And it's not like they've abandoned you, you know, they've sort of just left you so that you can process your own pain, you know, take the time you need. And I don't know who said that you are hurt or suffering or anything, but yeah, they think you're hurt or suffering and they want you to go through this alone, but if you need them, they're there. Okay. Makaya, your own guides say that you're very, you know, giving. Okay. You give more than you take, and it is a very good trait you have. You know, it's good that you're so kind that, you know, you give without expecting a lot in return. But with some people, it's okay to ask. Okay. And that is to make sure that, you know, you don't get sort of, you know, it is sort of to make sure that, you know, you don't get misused. Okay. So like when you ask for something in return of your kindness, it is just to make sure that, you know, you're not being misused for your kindness. Okay. It's sort of like a boundary.
Don't put your messages in cap. You'll get deleted by it, unfortunately. Sorry about that. Okay, Katie, let's see. Honestly, I wouldn't know. Yeah, I'm just as new to all of this. But yeah, Katie, I know it is strange, but she sort of had like these expectations with her connection with Jordan that, she sort of thought of him as a close friend and you more of you know, a fake friend. But, that dynamic definitely was changing, He is not interested like that. And then you make an effort to keep her involved in all that. So, you know, her change in perspective is sort of hitting her hard, that he wasn't really thinking of her as someone that important to, share share all of this with. And you know she thought he was better than this, and then she was blindly trusting him, and then he sort of betrayed her. And that was something difficult for her to learn. And honestly, I don't think she understands that as well. I don't think she knew why she was doing what she was doing. No, Faith, do you know when you came in? I don't think I've read for you, but yeah. Did you even post your question, Faith? I don't think you did. Mm.
Cosmos, thoughts of thoughts of the person on your mind. Just give me a second, everyone. I sort of got lost in my chat, so I'll just do these few people very quickly so that they're off the queue. Just give me 2 minutes, okay? This person thinks that you are someone they can build a future with. You know how some people lead you towards spirituality and inspire you to be a better person. You do that for this person. You inspire them. So, like, if there's a possibility of anything happening, they think you are a person they can definitely think about like that. Got it. Uh, I know she was clearly, crossing a boundary, but that's all she knew, and she wasn't in the right mindset, right? So now that the reality sort of hit her, Katie, she's realizing that she needs to do better, hence the weirdness, the awkwardness. It's her realization setting in, her thinking of how to take this forward, her being the better person. No, not really. It's not done. Once she, sort of fixes her whatever weirdness was going on, her behavior and her mindset, things will improve with the both of you, you know. She's learned that you were her friend, not this other person. So, like, it's not the end of your relationship, it's just the start of, you know, something new. She'll be a better friend out of all of this. No, not as a man, as a friend, A lot of people faith. She thought, you know, should be a closer friend to him than she is with you. You know how some people leave their old friends behind as soon as they find new people to make friends with? That's how she was going with it. Manokamna, yes. Keep your mind positive. You will definitely pass your exams. Both of them, you've done well. You've done better than you've expected, better than you think you have. I know, Katie, but again, just because she's a therapist doesn't mean she's perfect as well. She's human. She'll make questionable mistakes, clearly. But yeah, just give her time.
she'll fix whatever's wrong. She'll do better. Luna Ray, yes, definitely your person's very close when it comes to approaching you for a reunion. You know, like this person is almost like watching you, waiting for the right time to approach you. Okay? They're like, it's like, you know, how you wait at the station or at the airport with bags packed and everything. You're just waiting for that announcement that, you know, your vehicle has arrived. Thank you so much for trusting me with your time, space, and energy. I hope your reading resonated. And I hope I'm given the honor to read for you again, Katie. It's always a pleasure to have you. Yes, Luna, that one was for you. Kevin, no particular cause. These are just events that decided to happen on a certain day, you know. Like, it was just a difficult day for you, but don't worry, you know. Like, nights are always followed by days. Nothing too deep when it came to whatever's happened today with you. It was just a, you know, difficult day. And like everything, this too will pass. Okay, I know the day was tough. I know whatever happened was difficult, but you know, this too will pass. Okay. Faith, I didn't realize you were so close. It's your turn. How does this special person on your mind feel after you walked away from him? Um, Sort of restored. You know, this person felt like he was giving so much into this connection and not receiving the same energy back. But now that, you know, you sort of left with this person, he doesn't have to invest all this energy in you, rather than he can, you know, sort of invest it in himself, you know. You know, Faith, I'm just telling you what he feels, you know. um, you may not agree with what he feels, but this is what he feels, you know. So, like, I think this would be like a good confirmation for you that it was good walking away, because even after you gave him so much, you know, he still feels like he gave you all of that, you know. So, like, it's good that you walked away. uh, Happy Independence Day, I guess. गीता, क्या राहुल गीता से शादी करेगा? ओके, राहुल को क्लियरली बहुत सारे चॉइसेस हैं, लाइक
you're not the only person he's seeing at the moment. ठीक है गीता जी, like आई थिंक वो दो तीन लड़कियों से और बात कर रहा है, उनसे इन्वॉल्व्ड है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि चांसेस नहीं हैं, लेकिन ये बोलूँगी कि चांसेस कम है। ठीक है। Did I miss anyone? Let me know, because from my end I've answered all the questions. Okay, so I'll be ending the stream. Thank you everyone who was here today. I appreciate your time, space, and energy. I hope your readings resonated, and I hope I'm given the honor to read for all of you again. Until next time, bye bye.